Scan DNA is a venture of MYBooster Retails, which has been in the field of healthcare and healthcare solutions since a long time. And the latest technology, which is uh, around DNA, which is associated with DNA, is something that we have brought for you today. So this presentation is quickly to give you an idea about what this is and how it can help you. So now, before I go ahead and discuss with you what is scanned DNA, what is about DNA, I think we all are pretty aware that when it comes to the way in which we live, the way in which we eat our food, and the problems that we usually face with respect to our health, the most important thing is lifestyle disease. I think you all would completely agree that there are several lifestyle diseases that Indians are unfortunately suffering from. So let it be diabetes or obesity or cardiac diseases and so on. And these lifestyle diseases, the major reason for the lifestyle diseases is our lifestyle. Now, at the same time, it's not just our lifestyle. That means incorrect eating, incorrect exercise. That's not just the major problem, but the other major problem is also lack of guidance. So let me give you a very simple example. I'll start with an example. If someone is suffering from obesity, if someone is having problems related to weight, and the person has to now reduce weight, one of the very important tool in the weight loss we all know is exercise. And naturally people try to do exercise to lose weight, but I would want to ask a question over here to you also, as a person who's trying to understand this science, is that which time of the day for exercise is good, whether it is morning or evening? Now if I ask you this question, obviously your answer is going to be maybe early morning is good, because we have heard it from our elders, we have heard it from our parents and many people that early morning exercise is good. While some other people will say that no, early morning, it's not necessary that you should do exercise only in early morning. You could do it even in the evening, because it should be done whenever it is convenient. So what is happening is we are trying to bend our lifestyle advices, or adjust or suit to the environment, and we are trying to do all these exercises as per our convenience. But we never take into consideration about what actually suits our body, what is suitable for our body. Maybe it is so that some of us actually will get benefit of exercise only when they do it in morning, or some of us may get benefit of exercise only when they do it in the evening. Now who's going to tell that? Fortunately, now there is a technology that is available, which has been studied worldwide for last more than 25 years, and there are Nobel Prize and Nobel Award winning researches that are done around that. This technology is available today to not just give you solutions or answers to such simple questions like what is the right time of exercise, but also to answers to very complex questions, which can help in two ways. The first and most important way is the science of DNA, or science of this genetics that we are going to talk about, is going to help you stay away from disease and not allow you to actually succumb to or fall prey to such lifestyle disease. So diseases such as diabetes, cardiac disease, obesity, gut related problem, all these can be actually controlled and they can be prevented. At the same time, some people who are already diagnosed with this disease, the same technology, the DNA technology, can help you find out how to control them. There are many people who are who are struggling to control their sugar levels, cholesterol levels, but they haven't been able to do so. So this problem of lifestyle diseases can actually either be prevented or it can be controlled. And it is very important in a country like India, because we are the hub, or we are the epicenter of such lifestyle diseases. It is believed that more than 50% of the population is suffering from one or the other lifestyle disease. And the reason for that is our lifestyle. So when I say lifestyle, what includes our lifestyle? The type of food that we eat, the type of physical activity that we have. Many of us don't even exercise. How many of us do ensure that they exercise at least for 30 minutes a day? Very few of us. Followed by that, we are also exposed to junk food. Whether to consume that or not is a problem. There's a lot of stress. We get less time for relaxation. So all these and the lack of proper advice is actually making Indians more prone to lifestyle disease, and that's why we are suffering from a lot of lifestyle diseases. So today's discussion, I'm going to tell you how lifestyle disease can be prevented, and how this people who are suffering from it uh, can also use this technology to control it. Now, before we go ahead, I'll just quickly give you a statistics about what are the different lifestyle diseases across the
across the country. Now, it is believed that around 1.3 billion people and more worldwide are suffering from various lifestyle diseases. And if you see the top numbers of these diseases are of cardiovascular disease, cancer, diabetes. Now, when you say cardiovascular disease, it includes all diseases that are related to blood and heart. ओके सो फिर वो ब्लड प्रेशर हो गया हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, और इट मे बी स्ट्रोक, और इट मे बी bypass surgery and reasons for that. Even diabetes, we have seen that even in India, there are a lot of people suffering from obesity or diabetes. By the way, obesity, yani motapa, is also a disease. It's not just a condition; it is actually a disease, and it needs proper care. Even cancers are there. So there are many such diseases, and many people unfortunately suffering from it. But as we mentioned earlier, it can be cured and it can also be prevented effectively. Now, how it can be prevented? I'm sure you would have seen many advices given by people. ये खाइए, ये मत खाइए, उससे आपकी disease दूर हो जाएगी, या ये चूरन खाइए, इससे कम हो जाएगा. Well, these are advices where other people feel that they are giving to you, and it might work in you. But that's not the truth. There are some specific advices that are required only by you, and that will work only for you, and that will work only in you. For example, some time back I said that exercise time is important. Some people will respond to exercise in morning, while some people will respond to exercise in evening. Now, what is this? This is called as personalization. Identifying what suits your body and then providing you information on what is important for you. So likewise, similarly, for all these diseases also, there is now a requirement of personalization. Advice or suggestion, not which has worked in someone else, but advice or suggestion that is needed by your body, because your body is unique, and that's why it should be required by you. Now, to further understand how this technology works, let's quickly understand why these lifestyle disease happen. मतलब diabetes क्यों होता है, cardiac disease क्यों होते हैं, blood pressure का problem क्यों होता है, joint related problems क्यों होगा. So we are trying to now understand what are the roots of this disease. So if you consider that this tree is nothing but our human body, and if you try and understand that when people suffer from all these diseases, अगर किसी को कोई डिसीज, हार्ट का डिसीज है, लिवर सिरोसिस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, तो ये जो सब डिसीज है, ये सिम्टम्स है, ये बाहर से दिखने वाले सिम्टम्स या कंडीशन. लेकिन ये क्यों होते हैं? They happen because there is something wrong that's happening inside the body, deep within the body, in the roots of our body, जहाँ पे हमारे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं बॉडी में. वो केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट एनी टाइम व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग इम्बैलेंस, जहाँ कहीं इनका इम्बैलेंस शुरू हुआ, then definitely, if you are not suffering from either of these diseases, one will start suffering. So why people suffer from different types of diseases? Because there are many metabolic reactions, there are many chemical reactions that keep on happening in the body. There are many reasons in the body. If they get unbalanced, then definitely people will start suffering. And who controls whether there will be an imbalance of these chemical reactions or not? Two things will control. जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि stress, unhealthy diet, smoking, alcohol, these are the things that are going to control, or they are going to imbalance your chemical reaction. But they are not the only thing. As you might have seen that there are many people who suffered from cancer just because they were exposed to smoking, just because they were exposed to tobacco. But there are many people who, in spite of consuming tobacco or drinking a lot of alcohol or smoking, they may not necessarily suffer from cancer during their lifestyle. इसका मतलब क्या? It is not just this metabolic activity, these habits that make us more put us at risk of disease, but it is also our core, it is also our genetic makeup that decide. So some people are born with some weakness in the genetic makeup, and these conditions such as stress, lack of sleep, or improper diet and addictions, they further increase the problem, and that's why people suffer from condition. So what we are trying to say over here is that all these imbalances can be controlled, and we can also understand how strong or what type of advices are to be followed to ensure that these controls are there and person doesn't suffer from the disease. Now, this is something which is desirable for everyone in the world, everyone in the country, everyone in the world wants to stay healthy. Nobody wants to have type 2 diabetes or cardiac disease. Nobody wants to do that. And that's why there are certain practices or there are certain methods that are followed for maintaining our health. Now, let me tell you what are the conventional approaches जो बहुत पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं,
And then there are some modern approaches also that are there, but whether it is the old approach or new approach, there is still gap in this approach. So let me first tell you what is the old approach of healthcare. यानी पुराने जमाने में ठीक रहना, तबीयत ठीक रखना, हेल्थ ठीक रखना कैसे होता था. सो ओल्ड हेल्थ केयर अप्रोच कैसा था. सबसे पहले तो कभी भी डॉक्टर के पास मत जाइए, जब भी जरूरत है तभी जाइए. कब जाएंगे डॉक्टर के पास? ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो इट इज कॉल्ड ए सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस. दैट मीन्स if you are fit and fine, if you feel you are fit and fine, you are eating in anything and everything, you don't have a control on that, and then suddenly one day you feel that नहीं अभी बहुत टायर्डनेस लग रहा है, ये अभी थोड़ा सर दर्द ज़्यादा होने लगा है, या फिर फॉगी विजन होने लगा है, या नहीं वजन बहुत बढ़ने लगा है, ब्रेथलेसनेस होने लगा. तो ये सब सिम्टम्स लेके देन वी गो टू द डॉक्टर, एंड देन द डॉक्टर डायग्नोस, ही फाइंड्स दैट नहीं आपका वजन बढ़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, थायराइड बढ़ा है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट द डॉक्टर डायग्नोसिस फाइंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम. He may ask you to do some blood tests, and based on that he will start the treatment. Now what is that treatment? That treatment is given to suppress that disease. I will repeat, that treatment is given to suppress that disease. Maybe many times it is given to suppress the condition, not overcome the problem. It is given to only suppress the symptom. Just for example, अगर if you have suffered from a pain, आपका कोई अगर joint pain है, तो what is the medicine that is given? joint pain है, bone pain है, the medicine that is given is usually anti-inflammatory या pain killer. यानी पेन कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपको फील हो रहा है कि पेन कम है, बट पेन वहां से गया नहीं, पेन वहीं पे है. Okay, so have we cured the root cause of it? No, we are only trying to cure the symptom. So this was the old care approach, and definitely there were problems. So there were modern healthcare approaches that were brought in. What were the modern healthcare approaches? Same, if you are suffering from symptom, then you go to the doctor for diagnosis. Well, apart from that and the treatment that starts after that, these days people are also very keen to go to the doctor even before the disease sets. ये बहुत अच्छी बात है कि आज कोई डिसीज नहीं, ना डायबिटीज है, ना हार्ट डिसीज है, ना ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं, लेकिन आप रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं. आपको लगता है मैं तो हर साल में ब्लड टेस्ट करता हूँ और मैंने सब चेक किया, मेरे सब ब्लड टेस्ट ठीक है, और मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ. एंड देन वी फील दैट यस, वी आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप आवरसेल्व्स healthy, fit and fine. And then maybe we keep on hearing advices about कौन सा डाइट अच्छा है, कौन सा ऐप डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने योगा करने के बाद कहीं पता चला कि नहीं योगा नहीं, उनको वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, and so on. So we keep on getting influenced by people around. So modern healthcare approach is better than old healthcare, but इस modern healthcare approach में भी problems है. ओके, उसमें भी गैप्स है. क्या गैप्स है? सबसे इंपॉर्टेंट गैप है फ्रॉम मॉडर्न हेल्थ केयर अप्रोच, क्योंकि अगर ये मॉडर्न हेल्थ केयर अप्रोच यूज होता और इफ एवरीवन वाज फॉलोइंग इट, और एटलीस्ट मोस्ट पीपल वुड हैव बीन फॉलोइंग इट, तो द रेट ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज इन इंडिया शुड हैव ड्रॉप्ड. बट ऐसा नहीं हुआ है. रेट ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज इन इंडिया हैज ओनली वेंट ऑन इंक्रीजिंग. So why this is happening? This is happening because we are still treating only the symptom. We have not gone to the core or the root of it. So complete health, good health, what are the problems that should be actually approached? कौन से गैप्स है जो ठीक होने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट गैप है जो किसी भी मॉडर्न हेल्थ केयर अप्रोच में नहीं आता, एंड दैट इज प्रिडिक्शन. प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. मतलब मान लीजिए आज किसी को डायबिटीज नहीं है, कार्डियक डिसीज नहीं, कोई बीमारी नहीं है, द पर्सन इज हैविंग वेरी गुड हेल्दी डाइट, is doing good amount of exercise, but can you still predict whether the person in future will suffer from a disease? नहीं, कोई नहीं बता सकता. जैसे कि आपको अपने काफी एग्जांपल सुने होंगे कि there were people who were fit and fine, बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक दिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते करते they suddenly suffered from stroke, और जिम में ही they collapsed. Okay, so in spite of so much of fitness, what happened? Did anyone predict कि क्या हो सकता है वहाँ पे? Plus at the same time there were people who always said that नहीं मैं तो ज़्यादा नहीं खाने वाला हूँ, मेरा डाइट वैसे ही कम है, मेरा वजन कम है, तो मुझे कभी डायबिटीज़ की बीमारी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, डिसीज का प्रॉब्लम नहीं हो सकता. सो देयर इज नो प्रिडिक्शन पॉसिबल. कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये डिसीज होगा या नहीं. ये सबसे इंपॉर्टेंट गैप है और इसको दूर किया जा सकता है. सेकंड इंपॉर्टेंट गैप इज दैट some people who are suffering from diseases such as diabetes हो गया, obesity हो गया, या मे बी सिंपल डिसीज या कंडीशन ले लीजिए गट से रिलेटेड, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड. कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम? काफी लोग. देयर आर एटलीस्ट 50% पीपल हु विल से कि नहीं आए दिन हमको कुछ ना कुछ एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते रहते हैं.
ओके या कुछ लोग हैं विल से कि यार मैं बहुत वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ बट कभी कम हो ही नहीं रहा, थोड़ा कम होता है वापस आ जाता है एंड सो ऑन. So these type of cases are called as stubborn cases or difficult to handle cases. So modern healthcare approach होने के बावजूद भी ये cases आज भी address नहीं है. Fine. What are the other problem? The other problem is prediction available नहीं है, stubborn diseases के लिए control available नहीं है. The third important thing or the third important gap is that there is no customized treatment. यानी एक एग्जांपल देता हूँ, वेट लॉस करने के लिए, वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी बीच में एक थ्योरी निकली चली थी कि आप दिन में 2 ही बार खाना खाइए, बाकी बीच में कुछ मत खाइए, लेकिन ये दिन में 2 बार खाना खाने की वजह से आपका वजन कम हो सकता है. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है. बहुत सारे लोग कहेंगे यार दिन में तो हम एज इट इज 2 बार खाना खाते हैं, लेकिन हाँ दो खानों के बीच में देयर इज अ हैबिट कि आपने कभी चाय पी ली, कॉफी पी लिया या एक समोसा खा लिया, सैंडविच खा लिया. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट यानी 2 मील डाइट सेज दैट नहीं, आप दिन में 2 ही बार खाइए और उससे आपका वजन कम हो जाएगा, भले आप दोनों बार कितना भी कुछ भी खा सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट था, ये मैकेनिज्म था, ये सब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया कि चलो ये 2 बार खाने का डाइट का जो पैटर्न है, 2 मील डाइट, इससे मेरा भी वजन कम होगा एंड सो ऑन. मेनी पीपल ट्राइड इट, सम पीपल गॉट सक्सेस, नॉट ऑल. इसका मतलब क्या है कि कस्टमाइजेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. जो सब करे वही हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सपेक्ट रिजल्ट. तो आज भी मॉडर्न हेल्थ केयर में गैप, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? एवरीवन इज एट रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज, देयर आर सम प्रॉब्लम एवरीवन विल हैव, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ना तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है, ना बहुत सारे स्टबन इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज जो हम ठीक नहीं कर पाते. और हमें जो ट्रीटमेंट या एडवाइस मिलना चाहिए डाइट के बेसिस पे, एक्सरसाइज बेसिस पे हेल्दी रहने के लिए, वो ज़रूरी है कि वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हो, किसी और का ना हो. जैसे वन साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी एक ही साइज का ड्रेस हर कोई नहीं पहन सकता, हर एक के लिए अलग अलग साइज कस्टमाइज होनी चाहिए, वैसे कस्टमाइजेशन इज नेसेसरी. तो ये गैप्स क्यों है किसी के लाइफस्टाइल डिसीज मैनेजमेंट में है, या हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसका जेनेटिक मेकअप. See, if my genetic makeup is different than yours, the treatment that is applicable to me will not be applicable to you. यानी अगर सुबह 3 कप चाय पीने के बावजूद मुझे एसिडिटी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको भी ना हो सकता है आपको एक ही कप चाय में एसिडिटी हो, या आप चाय ना पिए फिर भी आपको एसिडिटी हो. इसका मतलब कि you are a different person, I am a different person, और since we both are two different individuals, the same therapy cannot work in both of us. आपके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए अलग रिक्वायरमेंट. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल डिसीज, यानी फिर वो मोटापा हो जाए, डायबिटीज हो जाए, इनको ठीक करने के लिए जो एडवाइसेस आते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं. मतलब मान लीजिए आपने कभी किसी डाइटिशियन की एडवाइस सुनी होगी, तो वो डाइट एडवाइस देने के बाद बहुत लंबा ऐसा डाइट का चार्ट बनाएंगे कि आप ब्रोकोली खाइए, अल्फा खाइए, स्प्राउट्स खाइए. बहुत बार हमें ये कॉम्प्लेक्स लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है कि ऐसे क्यों बताया गया. अगर उसका कोई जस्टिफिकेशन हो, उसका कोई बेसिस हो, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है. फिर एट द सेम टाइम देयर इज गूगल डाइट, देयर आर मेनी पीपल हु सर्च ऑन गूगल एंड गूगल स्कॉलर्स दे कीप ऑन एडवाइसिंग, नहीं आपने ये च्यवनप्राश खाइए, आपने ये फ्रूट खाइए, बीच में कोई कहेगा कि क्विनोआ खाइए, ओट्स खाइए. ओट्स पता नहीं इंडिया में क्यों फेमस है, कुछ और कंट्रीज में ओट्स घोड़ों को खिलाते हैं. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओट्स इज अ हेल्दी meal for everyone. So there is a complexity. So why modern healthcare approach is also not good is because everyone is unique and people have multiple issues, and that is why both understanding what is required for one person and making it simple is necessary. And this is something that can be brought with the help of technology that we are trying to tell you about. Now, in order to tell you that, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि if you would want to undergo, if you would want to understand if this technology will be useful for you, so definitely if it is going to be useful for you, I can help you in understanding. But for that purpose, I need to understand that what is your healthcare objective. आपने कभी सोचा है कि आपका healthcare objective क्या है? क्या आपका एम होना चाहिए, क्या एम्बिशन होना चाहिए हेल्थ के बारे में? तो यूजुअली हमारा एम एम्बिशन ये होता है कि हमें फिट होना चाहिए, कोई बीमारी ना हो. लेकिन फिर भी कोई बीमारी ना हो या हेल्थ फिटनेस लेवल में एक माइक्रो ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम पीपल हु हैव ऑब्जेक्टिव दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम सम लाइफस्टाइल डिसीज राइट नाउ बट आई वांट टू क्योर इट और कंट्रोल. ये किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यानी मुझे आज भी डायबिटीज है और मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ. फाइन, सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो उसको कहते हैं सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसीज ऑब्जेक्टिव. एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द डिसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके. दूसरा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी का कि आज मुझे कोई डिसीज नहीं है,
आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी लाइफस्टाइल डिसीज, तो मेरे लिए ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मेरे लिए ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि आज मैं, इफ आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम इट, देन कैन आई अंडरस्टैंड कि मुझे कोई डिसीज हो सकता है? ओके, भले ही मेरी फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, बट कैन आई अंडरस्टैंड वेदर आई विल हैव अ रिस्क ऑफ फैमिली diabetes, will I have a risk of heart blood pressure or heart disease? If I come to know, and if I come to know also how to control it, it will be good, because I'll be able to do that. Okay, so the other objective that I have in mind is, if I'm not suffering from disease, can I understand if I have a risk of disease, and if so, how can I control it? Right? Third important objective होता है जो डिसीज छोड़ के फिटनेस के बारे में होता है, यानी ठीक है, मुझे डिसीज है या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ या नहीं है, कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ बात अलग है, लेकिन मुझे फिटनेस चाहिए, मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ, मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, या मैं XYZ एक्सरसाइज करता हूँ, और ये एक्सरसाइज मुझे बैलेंस में चाहिए, मतलब सच दैट इट कीप्स माई बॉडी फिट, इट इज नॉट अननेसेसरी एक्स्ट्रा ओवर एक्सरसाइज, और इट इज नॉट लेस एक्सरसाइज। तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि जिनका ये ऑब्जेक्टिव, तो आपका इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ये जानना जरूरी है। अगर आज तक आपने ये सोचा नहीं, तो ये this is the right time to think about what is your objective. Is there any disease that you would want to manage? Is it so that you don't feel that there is no disease but you want to prevent it? Or third, disease is one thing but you just want to keep fitness. Now, based on your objective, let me tell you that we have a technology that can help you in all these objectives, because we have now mechanism to get deep into your body, look into your genes, tell you how to control your existing disease, or tell you whether you have a risk of disease or not, and third, if you are interested in fitness, how to control it. बट इस सब चीज़ों में करने के लिए, इफ डीएनए इज नॉट प्रेजेंट, ये जो कोर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बताएं, ये अगर नहीं है, तो व्हाट कुड बी द चैलेंजेस वही जो हमने मॉडर्न हेल्थ केयर अप्रोच में देखा। इंडिविजुअलिटी, हर कोई इंसान अलग है, इसलिए हर एक के रिक्वायरमेंट अलग हो सकते हैं, एंड द अदर प्रॉब्लम इज दैट कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे सजेशन है, कौन सा सजेशन फॉलो करें, राइट? सो ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन्स के टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें, ये एक्चुअली होता क्या है, फाइन? सो वी विल क्विकली गो थ्रू इट। नाउ व्हाट इज दैट? आपने डीएनए के बारे में तो सुना होगा, या आपने जीन्स के बारे में सुना होगा। जीन्स, मैं उन जीन्स की बात कर रहा हूँ जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ये जीन्स या डीएनए ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, नोबेल प्राइजेस भी मिले, और डे इन डे आउट मेडिकल फील्ड में डीएनए का उपयोग भी, डीएनए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, सो दैट इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ बेटर। आपने डीएनए या फॉरेंसिक टेस्ट में भी देखा होगा कि डीएनए के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मैच करता है या नहीं करता है, एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज दिस डीएनए? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, यानी छोटे छोटे सेल, बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम पेशी या सेल कहते हैं, और उसके अंदर, हर सेल के अंदर एक डीएनए का लंबा सा थ्रेड होता है, उसमें हमारी बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। यानी अगर आपके बालों का कलर आज ब्लैक है, मेरे बालों का कलर ग्रे है या ब्राउन है, या मेरी आंखों का कलर ब्लैक है और आपकी आंखों का कलर ग्रीन है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये हम, आपका डीएनए डिसाइड करता है, जो आपकी पूरी बॉडी में है और आपके हर सेल में। तो आप ब्लड निकाल लीजिए, सलाइवा ले लीजिए, हेयर ले लीजिए, हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा डीएनए होता है, और इस डीएनए के बारे में, इस डीएनए में पूरे बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन बताने की ताकत होती है। तो ये जो डीएनए जो हमारी बॉडी बनाता है, हमारा हेयर कलर डिसाइड करता है, हाइट डिसाइड करता है, स्किन कलर डिसाइड करता है, यही डीएनए डिसाइड करता है कि अगर वी विल सफर फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसीज और नॉट। और कितने डिसीज, 100+ ऐसे कंडीशंस है दुनिया में जो एक्चुअली साइंटिस्ट ने अभी पता किया कि दे आर एक्चुअली कॉज्ड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए। आपको शायद जान के यू विल बी सरप्राइज, आपको ताज्जुब होगा दैट योर डीएनए कैन ऑल्सो डिसाइड वेदर यू विल बी सेंसिटिव टू हीट और नॉट। मतलब आप जो चपाती ब्रेड खाते हैं, हो सकता है कि वो आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके डीएनए में ऐसा इन्फॉर्मेशन दैट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये आज पता किया जा सकता है। Now what is possible is, we can study human DNA, we can study these genes that you obtained from your parents, and we can tell two important things. The first important thing that we can tell about a person's body is whether you will have a risk of disease or not. सबसे important चीज। तो डीएनए के बेसिस पे हम क्या पता कर सकते हैं? whether you will have a risk of disease or not. Second, if you have a risk of disease, how to control it, okay, how to prevent it. And third important thing, if you don't want to check whether you have a risk of disease or not, the DNA can also tell you that if you are suffering from any problem today, whether it can be cured or not, and how it can be controlled. तो ये जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है, इसके बेसिस पे जो हेल्थ के पैरामीटर हम पता कर सकते हैं, उनको कहते हैं फिनोटाइप।
यानी पेट में दर्द होना, माइग्रेन होना, एसिडिटी होना, जॉइंट पेन होना, ये सब phenotype है. What are phenotype? The conditions or the health parameters that we are usually troubled with or we want to control. And who controls it? Eventually the DNA controls it. So DNA टेस्ट से हमें ऐसे बहुत सारे phenotype या parameter we can understand and we can take it. Now, why it's necessary to check DNA? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का DNA में चेक कर लिया और वही सिस्टम सब लोगों पे अप्लाई कर दिया. जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आपका DNA, हर एक इंसान का DNA अलग होता है. उसका DNA वो DNA उसकी बॉडी बनाता है. So understand what works in each individual, we have to study. Now let me give you some more examples on how DNA is worked. Okay, you would be surprised to know that there are many diseases that are actually caused because of some very common foods and very common problems जो हमने कभी सोचे भी नहीं. जैसे हमने मान लीजिए एनीमिया. ओके, एनीमिया क्यों होता है? तो यूजुअली एनीमिया यानी लो हेमोग्लोबिन विच ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू टायर्डनेस, फटीग, राइट. तो यूजुअली अगर हम चले जाए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर भी हमें आयरन की टैबलेट दे देंगे. ओके, या कहेंगे कि नहीं थोड़ा आप आयरन रिच फूड खा लीजिए, बीट रूट खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, राइट. बट एनीमिया यानी लो हेमोग्लोबिन और टायर्डनेस सिर्फ आयरन की वजह से या आयरन की कमी की वजह से नहीं होता. बहुत बार ये ऐसे डीएनए और जीन की वजह से होता है जो हमारे बॉडी में, जिसमें अगर कुछ चेंज आ जाए जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, तो इट एक्चुअली इंक्रीजेज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन विटामिन. जी हाँ, ये हो सकता है कि आपका एनीमिया इस वजह से, क्योंकि आपके बॉडी में कोई एक विटामिन की मात्रा कम है. हो सकता है विटामिन बी हो, विटामिन B12 हो, B9 हो, but that is going to solve your problem. So if you know someone who has been anemic, who has been very feeling fatigued, tired, what probably could go wrong is actually that person has a genetic deficiency of certain vitamin and it needs to be cured. Similarly, there are many other problems. Cholesterol control करने के लिए there is a gene called as APOE gene. इस जीन के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जाए. कोलेस्ट्रॉल में भी कुछ अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल. जैसे HDL यहाँ पे लिखा है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल. सो यू वांट लेस LDL एंड मोर HDL. तो डीएनए के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाए. आई गिव एन एग्जांपल. रेड वाइन इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ ऐसे कहा जाता है, बट रेड वाइन in 33% of the people in the world, red wine will not be good. I'll repeat, in around 33% people in the world, red wine will not be good. In fact, it may cause more problem. So, do you know whether this red wine is going to help you or not in cholesterol control? No, you don't. Why? Because you don't know that what your gene is. But if I come to know what your gene APOE is, I can tell you whether red wine will be good for you or not, whether लो कार्बोहाइड्रेट फूड विल बी गुड फॉर यू और नॉट, सैलेड्स विल बी गुड फॉर यू और नॉट. ऐसी बहुत सारी चीजें हम डीएनए के बेसिस पे बता सकते हैं. ओके, उसके बाद इन इंडिया दीज डेज देयर आर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी प्रेगनेंसी ठीक तरीके से ना होना, दिस इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी. इसका भी रीजन विटामिन बी बताया जाता है और उसका रीजन एक्चुअली हमारे डीएनए में छुपा होता है. Right? Acidity. There are many people, as I mentioned, who suffer from acidity. So, do you know what could be the common reason? The common reason could be the wheat consuming. जो गेहूं हम खाते हैं, वो भी रीजन हो सकता है. उसको भी कम किया जा सकता है. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो डीएनए के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि क्यों हो रहा है और उनका सोल्यूशन क्या है. Right? So, what are these genes? ये डीएनए जीन्स के बारे में मैंने बताया. ये वो फैक्टर्स है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. ओके, और ये वही फैक्टर्स है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं, हमारे डिसीज के रिस्क भी डिसाइड कर सकते हैं. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली नाउ वी कैन यूज द सेम जीन्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल दिस डिसीजेस. फाइन. Why? Because everyone is unique and everyone will have a different DNA and we can now find out which person needs what kind of treatment. So this science is called as nutrigenomics. ये साइंस ऐसा है जहाँ पे जीन्स के बारे में स्टडी किया जाता है, डीएनए आपका पढ़ा जाता है, डीएनए के बारे में डिटेल टेस्टिंग होता है और उस डीएनए के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने कौन सा डाइट खाना चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, ये बताया जाता है. If this is important because with the help of same DNA we can also predict certain diseases. यानी आपको sleep related problem हो सकता है या नहीं, आपके मसल स्ट्रांग है या वीक है, उनको स्ट्रांग कैसे किया जाए, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के चांसेस है या नहीं. तो ये सारी चीजें हमें जीन्स के बेसिस पे या जेनेटिक टेस्टिंग के बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड दैट एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर डिजाइनिंग अ प्लान व्हिच विल कीप यू हेल्दी. Because if the problem is in the genes, the solution also can be found within the genes. Now genes तो you cannot change because you are born with the gene. जैसे मैंने कहा था कि क्लॉक जीन जो डिसाइड करता है कि आपका एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिव मॉर्निंग में बेटर है इवनिंग में,
अब ये जीन अगर आपका इवनिंग क्लॉक जीन है तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये डेफिनेटली कर सकते हैं कि उस जीन के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज कैसे चेंज किया जाए सच दैट योर ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड. So what is changed is the modifiable factors such as your diet, your exercise, that is changed. The genes remain unchanged. But yes, this type of factors such as right diet, right exercise will definitely create a very supportive environment for your genes such that you will not face any problems. Now, this science, as I mentioned, has been used since last several years, even in India. And there are some cases that I just quickly wanted to share with you. For example, एक बच्चा था, just 7 years का बच्चा था, and since 8 months the person was or the child was suffering from severe stomach pain, a lot of stomach pain. Now you'd be surprised to know कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम थे. बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके आया, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन लिए, काढ़ा खाया अलग अलग या पिया अलग अलग टाइप का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का है, बहुत सारी चीजें की, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो रिलीफ. द चाइल्ड वाज क्राइंग एवरी टाइम, पेन होता ही था. व्हेन वी डिड अ जेनेटिक टेस्ट वी फाउंड आउट वेरी सरप्राइजिंग थिंग. ओके, इस बच्चे में दूध की एलर्जी थी, लैक्टोज की एलर्जी. व्हाट इज, हाउ कम समवन कैन बी एलर्जिक टू दूध? सो दूध में एक शुगर होता है जो उसको नेचुरल स्वीटनेस देता है, जिसको कहते हैं लैक्टोज. ओके, इस बच्चे में लैक्टोज के प्रति इंटॉलरेंस था. दिस चाइल्ड कुड नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज. तो जब भी ये लैक्टोज मिल्क के थ्रू पेट में जाता था, इट यूज्ड टू कॉज लॉट ऑफ पेन इन द स्टमक. सो व्हाट वाज द आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस? The diagnosis was that milk is a problem, lactose is a problem. Okay, and that's why based on that our experts, they decided to suggest that how lactose can be removed from the milk. You can consume milk products, but those which do not have lactose in it. Okay, यानी मिल्क ना खाने की जगह, यानी instead of drinking milk or consuming milk, it was suggested that the child should consume more of curd or buttermilk क्योंकि उसमें lactose नहीं है, right? So this was one interesting case. Okay, the other case was a female from Madhya Pradesh and around 28 years. बहुत सारे स्किन के रिलेटेड इश्यूज, इचिंग होना, एक्ने आना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मिले, अनफॉर्चुनेटली कुछ इशू नहीं है. When we did a genetic test, we found that the person actually had dry skin, tendency of dry skin. ये कभी नोटिस नहीं हो रहा. Tendency of dry skin यानी the person always had a skin type which will remain dry. तो उसके लिए एक सोल्यूशन होता है. सोल्यूशन इज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. अदर सोल्यूशन इज यू हैव टू अप्लाई सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर. Right? Now, in absence of that, the person is not cured, and there were many vitamins also which are important, but the female was not aware कि ये vitamin खाना जरूरी है. तो इस vitamin के basis पे, इस advice के basis पे, the advices were given to the female, and now today she is very happy with respect to the skin. So, जैसे जयपुर में हमारे ये थे फ्रेंड थे जिनको ओबेसिटी के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम था. जिम जाना हुआ, अलग अलग टाइप के आयुर्वेदिक पिल्स या मशीन्स, सोना बेल्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा था. When we did the genetic test, we found very interesting thing कि कौन से फूड एक्चुअली ओबेसिटी या वजन बढ़ा रहे हैं, कौन से फूड ओबेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि शक्कर हो, शुगर हो या ऑयली फैटी फूड है, हमें लगता है सभी की वजह से वजन बढ़ता है. ऐसा नहीं, कुछ लोगों में ऑयल की वजह से वजन बढ़ता है, कुछ लोगों में शुगर की वजह से बढ़ता है. तो अगर आप में शुगर की वजह से बढ़ता है, ऑयल इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो यू कैन कंज्यूम ऑयली फूड. तो ऐसे कुछ एडवाइसेस हमें पता चल सके बिकॉज वी डिड अ जेनेटिक टेस्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल. Sorry, and then based on that genetic test, we could suggest what type of diet, what type of exercise was to be done. So similarly, this is of a 64-year-old patient from another state, Maharashtra. Severe chest pain, continuously कुछ ना कुछ heart से related, tiredness, breathlessness, ऐसी सारी चीजें होती थी. And the person used to do lot of treatment. कभी होम्योपैथी किया, कभी एलोपैथी किया, अलग अलग डॉक्टर के पास गूगल से फाइंड आउट करके रेमेडीज लिए. पेन होना कॉमन था, फटीग कॉमन था, ब्रेथलेसनेस कॉमन था. जब हमने जेनेटिक टेस्ट किया तो हमें पता चला कि उनका रीजन हाई कोलेस्ट्रॉल था. और यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हाई कोलेस्ट्रॉल उनका क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज ही वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ रॉ वेजिटेबल. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. बट लोग बहुत सारा रॉ वेजिटेबल खाने की वजह से और अपोई जीन टाइप अलग होने की वजह से और बाकी बहुत सारे ऑयली फूड्स उन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कम कर दिए थे, बट स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ही डिडंट नो व्हिच फूड इज टू बी कंज्यूम्ड for controlling the cholesterol. So if one undergoes the genetic test, all these and such type of problems can be solved. जैसे मैंने कहा था शुरू में कि बहुत सारे
जीन्स या डीएनए के बेसिस पे बहुत सारे नोबेल प्राइजिंग अवार्ड विनिंग रिसर्च भी हुआ है। जैसे 2 साल पहले कुछ साइंटिस्ट थे यूएसए के जिन्होंने ये ढूंढा कि बॉडी क्लॉक क्या चीज़ होती है। हम रात को सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, या जब भी हमें कौन जगाता है? हमारा अलार्म क्लॉक नहीं जगाता, हमारा बॉडी क्लॉक जगाता है। ये बॉडी क्लॉक डिसाइड करता है कि आपको जेट लैग होगा या नहीं, आपने एक्सरसाइज सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, आपने कौन सा खाना कौन से टाइम पे खाना चाहिए। जी हाँ, इतनी डिटेल्स होते हैं। और ये फाइंड आउट किया था इन नोबेल लॉरिएट से, जिनकी वजह से उनको बहुत बड़ा प्राइज मिला। और ऐसे इंफॉर्मेशन आज जेनेटिक टेस्ट में या डीएनए टेस्ट में यूज की जा सकती है। तो ये डीएनए स्टडी करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे हम कोई भी एक कागज ले लिया तो उसके बहुत सारे कॉपीज निकालते हैं। तो अगर मुझे आपका क्लॉक जीन पढ़ना है, या मुझे उसके बारे में जानना है, या मुझे और कोई बॉडी में जीन के बारे में पता करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैं वो जीन आपके बॉडी में से या तो ब्लड में से लूँ या सलाइवा में से लूँ, और उसके सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके अलग अलग कॉपीज बनाऊँ। तो ये जो कॉपी करना होता है, फोटो कॉपिंग होता है, जैसे हम लोग फोटो कॉपिंग करते हैं, एक पेज में फोटो कॉपी बनाते हैं, वैसे ये डीएनए का फोटो कॉपिंग किया जा सकता है। ये जो रिसर्च था, ये कैरी म्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। बेसिस ऑन दैट टुडे जो डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी या डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके लिए बेसिक, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम लोग वो जीन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जो आपके बॉडी के लिए यूजफुल हो सकता है, और उस डीएनए के बेसिस पे आपको एडवाइस दिया जा सकता है, राइट। सो द बॉटम लाइन इज दैट there are modern healthcare approaches for preventive management, for active management, but what is the most important thing is that there is a gap in such lifestyle disease management. Gap is because we don't know what are the type of advices a person need. We also don't know that out of 100 advices, which advice is more important, and that is where is used to understand this. This science is called as nutrigenomics. Nutrition and diet, exercise advice based on genomics and genetic makeup of a person, and we have a very comprehensive technology which will help you achieve that. Now, how can we do that? This science, the standard definition of nutrigenomics, is a new method that can help you understand कि आपके डीएनए और जीन्स में और आपके फूड में क्या कनेक्शन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लैक्टोज, कोई सोचता भी नहीं कि किसी बच्चे को हम लोग जो यूजुअली फोर्स करते हैं कि उसने दूध पीना चाहिए, इस केस में बच्चे को दूध पीने की वजह से प्रॉब्लम। So nutrigenomic science can help you understand which foods are good for you and which foods are not good for you. At the same time, it also tells कि कौन से फूड के बेसिस पे आपके कुछ कंडीशंस दूर किए जा सकते हैं. You will be surprised, but there are some colors, fruits and vegetables which can be very effectively used as per your DNA to cure many health problems. Okay, so therapeutic quality भी fruits में होती है जो DNA से हमें पता चल सकता है. And the third important thing is that based on your genetic makeup, we will continue to understand that what is the right type of nutrient blend that you should have. कौन से DNA, कौन से टेस्ट हमने बार बार करने चाहिए, ब्लड टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए. So this is what is called as nutrigenomic science. Now we are very happy to present you our product that we have brought through years of research, and it is called as Scan DNA Genomics. Now what is that Scan DNA Genomics? It's a very comprehensive power-packed package which will provide you so many things. It will help you in understanding how आपका lifestyle कैसे change किया जाए, diet कैसे change किया जाए, exercise कैसे change किया जाए, कौन से disease के risk कम किए जा सकते हैं, कुछ medicines जो आपके लिए suitable है उनके बारे में भी बताया जा सकता है, आपने कौन सा exercise करना चाहिए. Now you don't have to depend on anyone to find out which exercise is good for you. Your DNA itself can tell. At the same time, इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपका डाइट भी एडवाइस किया जा सकता है. तो डाइट तो वैसे भी बहुत सारे डाइटिशियन आज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये डाइट अलग होता है. ये इसलिए अलग होता है क्योंकि ये आपके लिए बनाया जाता है. क्यों आपके लिए बनाया जाता है? क्योंकि इस डाइट में हमने आपका डीएनए सैंपल लिया है, हमने उसको पढ़ा है, और आपको डाइट में कौन सी जरूरत है वही डाइट के फीचर्स उसमें ऐड किए. एंड फॉलोड बाय दैट the DNA test, as I mentioned, it also will tell you कि कोई रिस्क है या नहीं, अगर है तो कम है या ज़्यादा, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए. फाइनली इट इज़, वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज़ अ वेलबींग प्रोग्राम. यानी इससे डिसीज क्योर होना तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम इवन प्रिवेंशन इज पॉसिबल. That is why we call it as a well-being or wellness program, and at the same time it will also help you in enhancing fitness. So ये क्या है Scan DNA? What is it? What actually is contained in Scan DNA? तो Scan DNA शुरू होता है आपके सिंपल सलाइवा सैंपल से. ये
हमारा किट है, स्टार्टर किट है जो आप यूज करेंगे। इस किट में देयर विल बी वेरी सिंपल ट्यूब, आपको कुछ नहीं, आपको उसमें सिर्फ आपका सलाइवा ऐड करना है। फाइन, सलाइवा ऐड करने के बाद इस बॉक्स में पैक करके वी विल गेट द सलाइवा सैंपल, और उस सलाइवा पे हमारे लैब में बहुत डिटेल टेस्ट किया जाता है। There are many genes, many parts of the DNA that are studied, and then a very comprehensive report is generated. Fine. तो उस रिपोर्ट में क्या क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीजें जो रिपोर्ट में पता चलती है। वेरी इंटरेस्टिंगली द डीएनए रिपोर्ट विल एबल टू टेल यू अराउंड समवेयर अराउंड 60 to 65 डिफरेंट पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर, ठीक है, 60 कॉम्प्लेक्स हेल्थ पैरामीटर जो अदरवाइज किसी ब्लड रिपोर्ट से आपको कभी पता नहीं चलेगा। आपको ब्लड रिपोर्ट से, रूटीन पैथोलॉजी लैब का जो आप टेस्टिंग करते हैं उसमें ये पता चलता है कि अभी शुगर कितना है या कोलेस्ट्रॉल अभी कितना है, बट आपको उसका रिस्क फ्यूचर में है या नहीं ये पता नहीं चलता। लेकिन इस डीएनए टेक्नोलॉजी, स्कैन डीएनए के बेसिक्स पे वो पता चल सकता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स डू वी कम टू नो? द फर्स्ट थिंग दैट वी कम टू नो इज what is the nutrition management, like what should be the balance of protein, carbohydrate and fat। आज आप खाते हैं, रोटी खा रहे, सब्जी खा रहे, चपाती खा रहे, ओके, बटर खा रहे, घी खा रहे, तो these are all nothing but mixture of protein, carbohydrate, fat। बट आपके बॉडी के लिए कौन सा यूजफुल है उसका एक रेशियो होता है जो डीएनए बता सकता है। दैट इज समथिंग विल कम टू। विल आल्सो कम टू नो वेदर योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, क्योंकि काफी सारे ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे ये पता नहीं चल सकता। एंड दैट इज व्हाई इट विल टेल कि आपको विटामिन बी की जरूरत है, B12 की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है, एंड सो ऑन। अगर आप विटामिन डी के टैबलेट खा रहे हैं तो आप वो सही टैबलेट खा रहे हैं या आपको उसका डोज चेंज करना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स यू कम टू नो बेस्ड ऑन दैट सिंगल रिपोर्ट। द रिपोर्ट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट वेरी इंटरेस्टिंगली फिटनेस एंड इंजुरी रिस्क। बहुत बार लोग एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, आउट ऑफ एंथुसियाज्म सम पीपल इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट फॉर 1 hour they start working out for longer durations. Now that may cause several problems. It has been seen that there are many people who suffer from injuries because of excessive exercise. Fine. At the same time, कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है? अगर मेरी बॉडी के लिए वॉकिंग बेहतर है तो मैं, और फिर भी इंस्टेड ऑफ वॉकिंग आई गो टू द जिम एंड स्टार्ट डूइंग हेवी वेट, इट माइट इंक्रीज माई प्रॉब्लम ऑफ इंजुरी। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, उसको इंजुरी की रिस्क है या नहीं, या उसमें कौन से एक्सरसाइज करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सा फूड उसके लिए सपोर्टिव रहेगा, ऑल दिस वी कैन कम टू। फाइनली वी आल्सो कम टू नो वेरी सरप्राइजिंगली अबाउट दोस फूड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे बट कुछ ऐसे फूड्स है जो हम लोग डे इन डे आउट खाते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, मिल्क हो गया, या फिर कॉफी हो गया। ऑल दीज फूड्स एंड मेनी सच फूड्स कैन एक्चुअली स्लोली डिस्टर्ब योर मेटाबॉलिज्म। सो व्हाई टू वेट फॉर? लेट्स अंडरस्टैंड whether these foods are in long term going to trouble us or help us. If they are going to trouble us, then we'll have to reduce their intake or stop their intake. If they are not going to cause a problem, we can continue using it. In fact, you can use it for your better. आपको जान के ये होगा, सरप्राइज होगा that caffeine यानी कॉफी can be a very good enhancer of weight loss. लेकिन कैसे यूज किया जाए कि ऑफ कोर्स आपको एक्सपर्ट से जानकारी लेके फॉलो कर सकते। Apart from that, the scan DNA basic test will also tell you about कि डाइट पे आपने ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक्सरसाइज पे करना चाहिए, कौन से इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइडियली दोनों भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों में डाइट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों में एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो दैट्स समथिंग यू विल कम टू नो। सो दीज आर द 60 डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स विद अ सिंगल सलाइवा सैंपल, with a single spit kit, and will come to 60 parameter. Besides, it's just a one time test. आपको एक ही बार करना है क्योंकि आपके जीन्स चेंज नहीं होते, बट एक बार करने के बाद जो रिपोर्ट डिटेल बनता है उसके बेसिस पे हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे, काउंसलर होंगे, दे विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल दैट व्हाट इज योर रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है, उसके बेसिस पे आपको डाइट में कौन सा चेंज करना है, कौन सा नहीं करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन इंप्रूव होगी या आपकी फ्यूचर रिस्क कम होगी, या दोनों हो सकता है। So these are something that we will be able to find out. Now there are in the 60 point, there are more than 40 such body tendencies that we will come to know. Okay, कि आपको टायर्डनेस की फीलिंग होने के चांसेस होते हैं या नहीं, आप कहेंगे टायर्डनेस तो मुझे होता है, तो उसका टेंडेंसी रिस्क क्या होता है। कुछ लोगों में इसके बार बार होने की रिस्क होती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड। प्लस यू कैन फाइंड आउट वेदर अल्कोहल कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी और नॉट। यस, there are many people who are concerned about it. Alcohol they are consuming either as a habit or maybe as a social drink, but in either cases ये जानना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल से हमें लॉन्ग टर्म में तकलीफ होगी या नहीं होगी। अगर तकलीफ होगी तो उसकी मात्रा कम की जा सकती है, अगर तकलीफ नहीं हो रही तो ये मैं नहीं कहूँगा कि कितनी भी अल्कोहल खाइए, कंज्यूम कीजिए, बट डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ द अल्कोहल।
सो ऐसे अलग अलग बॉडी टेंडेंसीज के पार्ट है जो हमें पता चल सकते हैं, जो अदरवाइज कोई भी ऐसी ब्लड टेस्ट नहीं, कोई भी ऐसे टूल नहीं कि जिससे हमें पता चल सके ना। ये टेस्ट करने के बाद काफी बार ऐसा होता है कि हमने टेस्ट कर लिया, 60 कंडीशन या हेल्थ पैरामीटर पता चल गए और हमारे डाइट एक्सपर्ट, एक्सरसाइज एक्सपर्ट ने आपको एडवाइस भी पूरा दे दिया और आपको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में देयर आर सम इश्यूज विच आर वेरी क्रिटिकल और उसको एडिशनल डायग्नोसिस की जरूरत होती है। जैसे हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और यूजुअली ब्लड टेस्ट किया, सोनोग्राफी किया, उससे प्रॉब्लम का पता नहीं चला तो डॉक्टर विल सजेस्ट यू कि नहीं ये बेसिक नहीं, आप एक एडवांस टेस्ट है जो करनी चाहिए, उसी में हमें पता चलेगा क्योंकि इसमें हमने करके देखा इसमें कोई सोल्यूशन मिला नहीं। फाइन, सो यू शुड डू एन एडवांस। सो सिमिलरली देयर इज एन एडवांस टेस्ट एज वेल एंड दिस इज आल्सो वन टाइम टेस्ट। अब इस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक बार करने के बाद आपके डीएनए के 7.5 लाख जीन्स का इसमें टेस्टिंग होता है। कितना? 7.5 लाख जीन्स। अपने बॉडी में जितने जीन्स है उसका एक मेजर पोर्शन है और ये रिपोर्ट बनने के बाद इट विल टेल यू अबाउट योर हेल्थ, बट दोज पैरामीटर्स विल बी क्लोज टू 200, यानी डायबिटीज की रिस्क है या नहीं, हार्ट डिसीज से रिलेटेड कोई चांसेस होने के है या नहीं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ये सब चीजें हैं तो उनको दूर कैसे किया जाए, रिस्क कैसे कम की जाए, मसल इंजरी की रिस्क है या नहीं। फाइन, फॉलोड बाय दैट there are many people who are not going to respond very well to the environment. थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया, तकलीफ हो गई, थोड़ा ज़्यादा रात को ज़्यादा तक लेट तक जागे रहे, आपको तकलीफ हो गई। तो ऐसी सारी चीज़ें, हाउ आर वी गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, ये भी हमें पता चलता है इसमें, और उसको क्योर कैसे। एट द सेम टाइम फूड इंटॉलरेंस, जैसे मैंने कहा कि शुगर हो गया, लैक्टोज हो गया, हीट हो गया, कुछ लोगों में इसके सेंसिटिविटी इंटॉलरेंस होता है और उसको क्योर करना चाहिए। Apart from that, it is this advanced test will also tell you about what are your nutrient requirements. कौन से न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो बोथ। मैक्रो यानी जो आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे आपका राइस हो गया, प्रोटीन हो गया ज्यादा मात्रा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी आपके विटामिन, आपको कभी कभी पिल लेना पड़ता है या छोटा सा टैबलेट लेना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी कम क्वांटिटी की जरूरत है। तो ये जेनेटिक टेस्ट बताता है कि आपको कौन से डेफिशिएंसी होने के चांसेस है। और इतना ही नहीं, कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी है यानी जैसे कि एंजाइटी, एडीएचडी, इसके बारे में भी हिंट हमें पता चल सकता है। ऑल्सो वेट मैनेजमेंट, सो देयर आर पीपल हु आर कंसर्न अबाउट देयर वेट, हाउ टू रिड्यूस दैट वेट, दैट इज आल्सो। स्पेलिंग की स्पेलिंग क्या है? Yes, So eventually, what is the IOU? So what is the Scan-DNA advanced method? It is a step ahead from the basic test, which will help you in understanding few further issues on how to keep control on all the lifestyle diseases. But looking at your condition currently, जितना मैंने आपसे ये information लिया, I strongly feel that you should start with the basic manner, जहाँ पे हम 60 parameters आपके बारे में पता कर सकते हैं. Our dietitian will connect with you. She will explain you the report. And she will also design a diet chart for you and an exercise chart. Fine. Apart from that, I'm happy to mention that we also have a separate simple test for kids. Now, it is very important that kids have right nutrition from childhood and beginning. Now, it is good to have genetic based nutrition because there are many problems that children may suffer from as they start growing in. And that is especially because of the lack of nutrient. जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत ही एंशियस है, हाइपर एक्टिविटी है, सुनता ही नहीं, कंसंट्रेशन कम होता है, आपको जान के सरप्राइज होगा कि विटामिन बी की कमी की वजह से ऐसा होगा. Right? So your kid is restless and hyperactive. The reason may be vitamin B. But has anyone told you today about this? No. But yes, our DNA test can tell you about that. Fine. There are many major problems that can be arrested right in the beginning, such as PCOS, skin-related issues, and so on. That's why there is a separate package for DNA टेस्ट कैसे किया जाए, इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है. आपको सिर्फ इस किट में एक सलाइवा देना है, आपका स्पिट सैंपल देना है, और उसके लिए आपको कोई फास्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है. Simply provide us the sample, saliva sample. We will arrange to pick up that sample from your place. That sample is then taken to our lab. This lab is highly accredited. Our lab is highly accredited lab which has been known in the field of genetic research since last 14 years. The sample reaches over here. A detailed testing is done. बहुत सारे experts उस report को analyze करते हैं और report को multiple stage में analyze करने के बाद, अलग अलग experts से check करने के बाद finally report release होता है.
और ये उन एक्सपर्ट्स के पास जाता है जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिजनोमिक काउंसलर्स. ये आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करके दे एक्सप्लेन यू व्हाट इज द आउटकम ऑफ द रिपोर्ट एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड फॉलो इन योर डाइट, एक्सरसाइज एंड lifestyle. Fine. So this is how different steps of doing the test are. So आपको तो ब्लड सैंपल भी देना नहीं है ना, आपको फास्टिंग करना है, आपको सिर्फ माउथ रिंस करना है 2-3 बार पानी से, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड द सलाइवा सैंपल. आप मेडिसिन खा रहे या नहीं खा रहे, फास्टिंग कर रहे नहीं कर रहे, इससे कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं होता. एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन गिव द सैंपल. Fine. I quickly want to, before we sign up, I want to tell about the lab. This lab which we have in India, which does this entire processing, it has been in this field of DNA research since last 14 years. So our lab has around 30-35 people who are scientists working in this field, and this lab has also been the first lab in the country to train more than 500 doctors and dietitians in the country. So they are the experts and they are the pioneers who took this ahead and trained doctors and dietitians to understand how genetics is to be used. So some of those experts themselves will be available for the counseling, and this is the lab which has done highest of this type of testing, nutrigenomic testing in the country. The number is more than 15,000. As we speak, the number is going on increasing. The lab of course has many national international accreditation. जैसे NABL सबसे important माना जाता है लैब के लिए. ये लैब NABL है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, और सिर्फ इंडियन नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल accreditations भी है, जैसे NRL, Treat Asia. So you can be very sure that your sample is safe in the right hand, in the authentic hands, genuine hands, and your information remains throughout confidential and it will not be shared with anyone else. Right? That's all. Thank you very much.